Hey everybody, I don't know about you, but I absolutely love mysteries and crime drama. Season 2 of Delhi Crime offers us just that. Season 1 of Delhi Crime focused on the Nirbhaya case. You know, the brutal gang and murder case that took Delhi, India, and the world by storm. This season doesn't stem off of that one, which means it's a anthology series. Same cast, but totally new story. Season 2 focuses on a gang, the Kacha Banyan gang, who would take Delhi by storm when they start engaging in a series of murders that they haven't committed in many decades. This show is anchored by Shefali Shah, who plays DCB Vartika Chaturvedi, and Rasika Dugal, an IPS trainee. So Harris, Delhi Crime Season 2, I'm excited. Are you? I've been a fan of season 1, and this one is like, it's back, it's bigger, it's better. I'm excited for sure. Yeah. So I love this powerhouse duo, Shefali Shah on one hand, Rasika Dugal on the other. They are great actors and they are totally believable in this world of Delhi crime. So let's get started and talk about episode 1. I found episode 1 gripping. It was totally different than the first season that we witnessed, but I think it was equally compelling so far. What I loved about this episode was that it started off with a bang. The very first lines of the episode that came on the screen was that 1/3 of Delhi's population lives in unauthorized slums and they serve the elite. The elite in Delhi are the highest earning per capita in all of India. So basically, it's showing us the dichotomy between the haves and the have-nots, the different lives they lead, the privileges one section has versus the other, the hardships that, the less privileged have, and just the animosity or resentment that's built between the two, because essentially the elites live different lives than those who don't fit into their, class. And the Delhi they live in is a whole different world compared to the average person. And here, not just the average person, but those who are the help. Those who are not even middle class. Jo log elite hain, maybe they have access to things that others don't. Or ye jo others hain, inki life hai, is probably filled with hardships, struggles, obstacles जो हर रोज फेस करनी है और ओवरकम करनी है. तो मुझे लगता है ये सिर्फ दिल्ली का नहीं है, पूरे इंडिया का नहीं है, पूरा वर्ल्ड का है. कि there's different classes and with those classes come different lives, different privileges, different access, different education, healthcare, ये सब दिखता है. एंड इस शो में इन्होंने right off the bat यही कहा कि this is the दुनिया you are entering into. You're going to see the stark differences between the have and the have-not. Kirti, I love that concept. It's totally relatable and I understand where it's coming from. I love कि उन्होंने ये दुनिया दिखाई हुई है because ये, बंदे को खींचती है and it's totally relatable. So I love that. And दिल्ली का है ऐसा ही एक जगह होगी जहाँ पे इतने बड़े-बड़े घर हैं, nicely paved सड़कें हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं और कुछ feet दूरी जहां smaller tenants जहां रहते हैं, smaller structures घरों के, जो structures भी नहीं है sometimes, ये सब दिखता है. Opening scene यही था. There was a grand home. वहां एक house party चल रही है, dinner चल रहा है amongst 4 people. Retired doctors की जोड़ी है, Arora family and their friends who come for dinner, है ना. अचानक से लोग आते हैं. They are wearing a rumal over their face, like shorts हैं. मुझे लगा कि it's a vest going on. बाद में हमें पता चलता है इस कच्चा बनियान gang, right? But तभी देख के पता लग गया था कि okay, these are definitely from a different stratosphere, है ना? ये लोग जो इस घर में रहते हैं, they are totally different world than ये जो आए हैं उनके घर में forcefully. And फिर ये भी दिखता है कि the house at every level has CCTV cameras. हर एक इमेज कैप्चर हो रही है. इन जो ये 2 जने आए थे घर के अंदर, they didn't care. खुले आम उन्होंने किया जो भी किया, वो भी बहुत brutally किया. Axe लेके. Can you imagine someone crashing into your house, getting an axe and beating the shit out of you? Damn, that's crazy. And then जब ये खुलासा होता है कि ये murder हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, जब वर्तिका आती है,
you see all the insanity that happened. जहाँ बात हुई ये मर्डर की, तो वहाँ दूसरी तरफ एक आईनी है जहाँ पे दिल्ली पुलिस एक ट्वीट कर रही है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे, शहर से बाहर ना निकलना, that sort of stuff. So there's a lot going on. With you, for you always. Hashtag Delhi police. And think about the irony. एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम यहाँ सुरक्षा करेंगे आपकी, हम हैं आपके लिए, और दूसरी तरफ ये murders होते हैं, which goes to show कि intentions अच्छी हो सकती हैं किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट की, but you don't know कि कब क्या हो सकता है, and especially in such a densely populated area like Delhi, है ना? और उन्होंने काफी बार ये जिक्र भी किया था throughout the episode कि we don't have personnel. उन्होंने कहा था per 1 lakh population they only have 130 cops, so that is nothing. How are those people, those cops, supposed to manage and oversee all of this population? तो difficulties है, और difficulties के साथ funding का issue है. तो अगर cops है भी, उनको pay नहीं मिलती, pension नहीं मिलती, सुविधा नहीं है. So it's a very complicated mess, and I like कि इन्होंने ये दिखाया और सुनाया हम सबको कि हेलो ये क्राइम्स होते हैं, लेकिन हमारा हाल भी देखो, इतना अच्छा नहीं है, चाह के भी हम कर नहीं पा रहे क्योंकि we don't have the funding or the resources that we need. Yeah, Sikiti, that's the thing, when it comes to that sort of stuff, उनके पास funding नहीं है, उनके पास cops नहीं है, and I love the way शेफाली शाह, वर्तिका ने एक मैसेज दिया था, वो कहती है कि हम चाहे अगर एक मर्डर भी रोक सकें या एक क्राइम भी रोक सकें, वो भी हमारे लिए काफी है, फख्र की बात है. So I understand कि कितना कुछ हो रहा है दिल्ली में. And ये बात वो करती है with the Commissioner Vijay. And Commissioner Vijay is played by Adil Hussain, जो बहुत ही अच्छा एक्टर है. I love him in this character. वो अपनी अथॉरिटी दिखाता है, लेकिन वो कमाडरी भी दोनों की दिखती है इस सीन में, जहां ये बातें कर रहे हैं कि ये डेटाबेस सेट हो गया है, अब हम अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, लॉग कर सकते हैं, लेकिन is that making a dent? Is that enough? जो back and forth Shefali Shah and Adil Hussain do throughout the episode, I love it, क्योंकि it's two strong actors coming up with each other in the screen, तो धमाका होता ही है. And then रसिका दुग्गल की जो घर की सिचुएशन है ना, is totally different than शेफाली's. शेफाली का जो हस्बैंड है, he is understanding, उसको पता है कि इसका क्या जॉब है, what it entails, क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चनिंग कभी नहीं होती उसकी. encourages है, वो उसको encourage करता है, सपोर्ट करता है कि आगे बढ़ो लाइफ में, I am with you, मैं तुम्हारे साथ हूँ. And I love कि काम पे this is DCP वर्तिका चतुर्वेदी and घर पे babes. It shows कि however strong and high position a female is in, घर पे she wants that intimacy as well, and her husband gives it to her. On the flip side, जो नीति है, जो जिसका husband देवेंद्र है, you see कि वो totally dependent है उस पे. वो वेले जैसा बैठा है घर पे, वो खाना बना रही है, खाना बना के उसने जाना है, और she's in the cop वर्दी, और वहां रोटियां बेल रही है, एंड जब उसको काम पे जाना है, जब वो कॉल आती है कि ये मर्डर हुआ है, you need to come on the scene, she can't go क्योंकि मदर इन लॉ ऑफिशियल कार लेके सब्जियां खरीदने गई हैं. So it just shows कि जहां एक फैमिली में the husband knows कि this is my wife's job and she needs to do it, दूसरे घर में इट्स ऑल कि अच्छा ये जॉब है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, क्योंकि उसका हस्बैंड बार बार वो पूछता भी है ना, हमारे ट्रिप का क्या चल रहा है, हमारी ट्रिप हो रही है ना, ये पैसे जुड़े हैं ना. दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये किस प्रेशर में है, कौन सा प्रेशर फेस करती है अपने वर्क में. सो इट्स रियली cool to see that tension, the balancing act जो रसिका करती है इस शो में. Not just that, Kirti, उसकी एक जिंदगी अलग से उन्होंने दिखाई हुई है, and they've shown कि there's different lives in India. एक अच्छी लाइफ है, एक high level की लाइफ है, और एक working class की लाइफ है, and that's what she is. There's a woman who obviously is on a high level post, वो घर आती है, उसके पास एक simple सी family life है, और फिर एक अलग सी story है जहाँ पे एक पत्नी को अपना काम करना पड़ता है, उसका हस्बैंड उसके पीछे काम पे आता है, उसके बैग्स उठाते हैं, उसको बोलते हैं कि तू जल्दी कर, मैं तेरा इंतजार करता हूँ, तो दैट स्टफ, एंड देन वो गुस्सा हो जाता है कि इतनी देर लगा रही है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा. तो there's a diversity, there's a different sort of lifestyle they've shown. ये सब होता है हर एक फैमिली, and this happens. जहाँ तक you said कि सिंपल लाइफ, इतनी सिंपल भी फैमिली लाइफ नहीं है वर्तिका की, क्योंकि पिछले सीजन में हमने देखा था कि उसकी जो डॉटर है चंदू, she was very afraid to
interact in the public दिल्ली में सेफ नहीं मानती थी खुद को क्योंकि जो रेप्स होते हैं राइट तो वो हमेशा बाहर जाना चाहती थी कि बाहर सेफ्टी मिलेगी तो इस सीजन में उन्होंने दिखाया कि वो बाहर चली गई है शी इज इन टोरंटो उसकी मॉम उसको कॉल करती है फोन्स नहीं उठाती एंड वो कहती कि एवरीडे बात करने की जरूरत नहीं है ये टोरंटो है दिल्ली नहीं एंड माँ तो माँ है वो कहती नहीं मुझे फिर भी चाहिए दिलासा राइट दैट यू आर ओके एंड तो किसके साथ गई थी बाहर एंड सो जो लड़की है शी फ्रीक्स आउट लाइक व्हाई आर यू हवरिंग ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्यों कर रहे हैं एंड दैट्स द थिंग विद इंडियन पेरेंट्स है ना उनको हर एक चीज का पता होना चाहिए किसके साथ क्या किया कहाँ गई क्या हुआ घर कब आई ये होता है सो इट वाज नाइस टू सी कि जहां उसका काम है शी इज इन अ रिस्पेक्टेड पोस्ट जहां सब उसको मैडम सर मैडम सर मैडम सर बुलाते हैं राइट रिस्पेक्ट देते हैं दर्जा है उसका घर पे हस्बैंड उसका साथ देता है लेकिन जो लड़की है उसकी जो डॉटर है उसकी she doesn't give that darja ki ye meri maa hai kaise baat karni hai kya hai so you see there's a little difference that happens professional and personal life so Kirti moving on to the scene of crime Vartika obviously goes there वो जाती है वहां पे तो सिक्योरिटी काफी टाइट है मर्डर हो चुका है तो एक बड़े से मैंशन में वो जाती है और देखती है वहां पे कि इतना कचरा फैल चुका है बुरा हाल है बॉडीज वहां पे पड़ी हैं खुले में किसी का मुंह कटा हुआ है किसी का खाना फेंका हुआ है सर पे कितने कट्स थे सर पे कितने कट है उसका चेहरा ही खराब है ना ओह गॉड व्हाट द हेल मुझे तो डर लग गया आई वाज लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन obviously फिर मूविंग फॉरवर्ड वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है कि ये मर्डर किस चीज का है how are these people it was so shocking क्योंकि जब ये फैमिली एंड फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस होते हैं लाइक सिविलाइज्ड तरीके से वो खा रहे हैं बैठ रहे हैं एंड देन जब हमें क्राइम सीन दिखती है the food is all over the place the dishes are all over the place there's empty wine bottles on the floor and then you realize slowly ये clues put together हो रहे हैं कि अच्छा ये है then you see one of the cops he sees the finger and कहता तेल है so I thought कि मारा है उसको right and then jewelry निकालनी है अटक गई तो तेल लगा के jewelry उतारी है but we find out कि no this is the MO of a specific gang क्योंकि जब नेबर से बात हुई उसने कहा कि मैं ना छत पे गया था to take a leak and I saw this person enter with a कच्चा बनियान ये पता चलता है कि they put oil all over their bodies so that resistance कम हो so they can't get caught और बंदा फिर फिसल जाए exactly so then you see all of this and वो हैरान परेशान है सब कि इन्होंने तो murders करना बंद कर दिया था in the 90s they were prolific ये अचानक कहाँ से आ गए DCP Vartika talks to Commissioner Vijay तब उसने कहा था कि हमें लग रहा है ये कच्चा बनियान गैंग है ये क्लूज मैच होते हैं लेकिन prior they targeted homes close to the railway जहां easy access है secluded areas में जाते थे यहाँ एक affluent gated community में नहीं गए और अब गए हैं so is it the same gang so I really liked हाँ we're leading here but they're trying to answer all the questions connect the dots don't leave any stone unturned एक conversation होती है and ये जो CP Vijay है he says should I be worried and then she goes about me that'll be the first he goes no not you so she's competent in her job and that competence you also see jab Arora's ki daughter aati hai she can't go see her parents kaise wo Shefali na mix of authority and empathy ki I understand tu milegi unko lekin please unka chehra mat dekhna and I'm sorry you cannot go inside agar main Shefali Shah ki jagah hoti I would have broken down. I would have started crying looking at someone's like parents just died. The daughter can't see them. But yahan you can see she's feeling sad. But as her role, she has to stick to protocol. Definitely, Kirti, she's unbelievable because the way she keeps herself strong. That's amazing to see. Uski aankhon mein dard dikhta hai, but also it shows himmat, courage as well, and I love that. One of the most powerful scenes that I liked of Shefali Shah was like, this is our plan of action, to protect everything around. Security increase करो South Delhi में gated communities का जो इलाका है वहाँ पे आपने security बढ़ानी है, increase करनी और वो साथ साथ ये भी बोलती है कि शहर में जितने भी CCTV footage है वहाँ पे check करो आप जाके हर check point पे जाके नाकाबंदी करो so I like that. And she says कि सब सिर्फ मुझे report करेंगे
राइट, रोज मैंने ये बात फैलानी नहीं है, पुलिस स्टेशन में भी किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो पॉपुलेशन है, जो सिविलियंस है, उनको पैनिक हो। तो जहां ये सीन दिखता है हमें कि वर्तिका इज शोल्डरिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कमेंट आता है देविंदर से, जो नीति का हस्बैंड है, कि ये पूरा दिल्ली का जो भार है वो मेरी वाइफ के कंधों पे है क्या। ही मेक्स दी स्नाइड रिमार्क्स, वो खुल के बता भी नहीं सकती कि कितना इंपॉर्टेंट उसका काम होता है। एंड देन वी फाइंड आउट कि सीसीटीवी फुटेज जो घर में थी रिकॉर्डेड, इट गेट्स लीक into the press. I legitimately think that it was Neeti's husband. He did it. क्योंकि उसको पता चला ना, उसी ने तो बताया. And I'm like, oh shit, Rasika is in trouble. Yeah, that's what I thought as well. When I saw it, I was like, oh God, is bande ne kuch kiya hoga? Because, you know, he was like insecure about his wife, कि मेरे साथ time spend करे, मुझे प्यार दे, काम छोड़ के घर चली जाए. So I was like, you know what? Insecurity और गुस्से की वजह से शायद इसने किया होगा. So I was like, wow, what is going on? So obviously turning point इस episode का तब आता है जब ये CCTV footage, leak होती है press में. Then जो commissioner है, he takes a stand against Vartika. What the hell happened? What are you doing? Everyone is freaking out. And now you need to add someone in your team who can handle this, who has experience, working with this kind of case. तो फिर किसका नाम आता है? वीरेन चड्डा का. He's a retired cop and he has a history with Kachcha Banyan gang. And जब उसकी एंट्री होती है, I think it was phenomenal. ये महंगाई के जमाने में, I don't have pension, मुझे आज तक पेंशन ही नहीं मिली अपने रिटायरमेंट की. कॉप बन के इतने साल मैंने अपनी लाइफ दी है, मुझे मिला क्या है? पैसे नहीं ढंग के. And then you're looking at his surroundings and thinking, सच्ची पैसे नहीं है. And I loved कि जो कॉप्स पूछने आए थे उसको, टीम ज्वाइन करने के लिए, they were like, really? You don't have anything, है ना? So that was really cool. And वो कहता कि अगर मैं काम करूं, मुझे पहले रिटन गारंटी चाहिए कि मुझे पेंशन मिलेगी. कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन you need to fulfill my requirement first. He has a very brash way, or old school way of talking and handling things, totally different than Vartika. Definitely Kirti, he's a strong character, and that's what I like about him. He says what's in his mind, and that's what's obviously what we see forward. कि वो जो है वो है, and that's what I like about him. End of the episode जब होता है ना, तो call आती है police control room में. It's the gang calling. They basically say, we are here and हमारे पास ऐसा तेल है that we can use to literally screw you. Yeah. Right. Exactly. And I was like, damn, है ना? And Shefali was like, ये कोई joke है क्या? You can see कि ये जो लोग हैं जिन्होंने कॉल की है, they have a distinct way of talking. कोई accent है, dialect है इनका जो different है, जो common dialect है दिल्ली का, वो नहीं था. So साफ पता चलता है कि ये बाहर से हैं, दिल्ली के नहीं हैं. जब ये एपिसोड शुरू हुआ ना, तो मैंने देखा कि घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं. So I automatically thought कि जिन्होंने मर्डर किया है ना, they will find them quickly, क्योंकि सब है recorded, उनकी शक्ल दिख रही है, सब दिख रहा है, right? जब पता चला कि ये ब्रैकेट है कोई, गैंग है कोई, फिर I was like, okay, it's gonna be complicated, क्योंकि they have to get the root of the problem. कि कितनी बड़ी है ये गैंग, कहाँ फैली हुई है, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आई है. Yes, how do they take care of this gang who is unleashing havoc? So that's it for us today. I am so excited कि next episode में हमको क्या-क्या देखने को मिलेगा, क्या clues इकट्ठे होते हैं. ये जो वीरेन चड्डा आता है, how will he work with Vartika? वो क्या expertise लेके आता है? ये friction होगा उन दोनों के बीच, क्योंकि वो lead है, she's the DCP. लेकिन वो भी आ रहा है as an expert in this crime. So it's going to be nice to see कि उनकी टक्कर होती है या नहीं. It'll be also interesting कि हमें जो murderer है, will they introduce that character or not? So I'm really excited to see what happens. कहानी में क्या twist आएगा, Please comment down below आपको episode 1 कैसा लगा? What do you think is going to happen? How do you like returning to this world of Delhi crime? Also follow us on social media. I am Puri602. Harris is? I am Harris_16. And there you have it, guys. Please like, share, comment, and subscribe, and we'll see you next time.